Hello everyone, I CA Shikha welcome you all on the taxation talk, and today we are going to discuss the audit under section 44AB of the Income Tax Act, that is the tax audit, and it's a recent due date now. 15 January 2022 is the due date of the tax audit of the assessment year 21 and 22. So I thought I should discuss on this topic so that everybody take the help and get benefit from this video. So here we are going to discuss two things: statutory provisions of the section 44AB and the key points on the tax audit form. Starting with statutory provisions under section 44AB. Our section 44AB provides the 5 clauses for the tax audit. Means if assessee gets fall in any of the 5 clauses, then assessee is required to get his accounts audited. So first one is when the business receipts are more than 1 crore or the 10 crores as the case may be. अगर हम फाइनेंस एक्ट 20 देखें तो this limit was not 10 crore, it was 5 crores, but the finance act 21 has increased this limit to 10 crores rupees. So when the limit of 10 crore rupees shall be applicable in the case, that we will discuss in the upcoming slide. So अगर assessee की business receipts 1 crore या 10 crore से ज्यादा है, then assessee को अपने accounts की auditing करानी है. Next is when the professional receipts are more than 50 lakh rupees, then that professional is required to get his accounts audited by a chartered accountant. Our next clause is when assessee is carrying on the business under section eligible businesses under section 44 AE, 44 BB, in 44 BBB. In these section, the act has prescribed some minimum profit. Just like अगर हम 44 AE की बात करें, the section pertains to those assessee which are engaged in plying and hiring of good carriages and which prescribe the minimum profit according to that carriage. Next is 44 BB. The 44 BB is a section relates to non-resident who is engaged in prospecting and extracting of mineral oils, and section 44 BBB, and this section is related to the foreign company who is engaged in power turnkey projects. So in 3 sections में अगर assessee fall करता है and assessee is claiming that he has earned a profit lower than the profit that is prescribed in this section, then he can show, means he can show that minimum profit less than that minimum profit only after getting his account audited. Next we have 44 ADA. तो 44 ADA जब एक प्रोफेशनल ऑप करता है, मींस इस सेक्शन में होता है कि अगर उसकी बिजनेस, उसकी प्रोफेशनल रिसीप्ट्स आर अप टू 50 लाख रुपीस एंड he is showing the profit minimum 50% of that professional receipts, then he can opt the section 44 ADA. But if he claims that he has earned the profit less than 50% and his income exceeds the maximum amount not chargeable to tax, then he can show that minimum he can show the profit less than 50% only after getting his accounts audited under section 44 AB. And next is when the assessee is engaged in section 44 AD. The 44 AD section कहता है कि अगर उसकी professional receipts are up to 2 crore rupees and he has earned a profit, means uska profit is minimum 6% or 8%. 6% is in the when all the receipts are through banking channel and 8% in the cash mode cases. तो अगर उसका profit less 6 and 8% है, minimum 6 or 8% है, then वो section 44 AD ऑप करता है. But 44 AD में clause है 44 AD4, वो प्रोवाइड करता है कि अगर एक assessee ने
एक बार सेक्शन 44 AD ऑप्ट करा है, जैसे उसने 6% और 8% प्रॉफिट दिखाया है, then in the upcoming 5 years he has to show the profit according to the section 44 AD. जैसे अगले 5 सालों में उसे 6 और 8% मिनिमम प्रॉफिट दिखाना है, और अगर वो किसी भी एक साल में लेस देन 6% या 8% प्रॉफिट दिखाता है, देन अपकमिंग 5 इयर्स तक वो सेक्शन 44 AD ऑप्ट नहीं कर सकता. अगर आप एक बार सेक्शन 44 AD में गए हैं, देन आपको अपकमिंग 5 इयर्स तक 44 AD सेक्शन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट दिखाना है, और अगर आप एक बार भी बाहर आते हैं उस सेक्शन से, देन आपको अपकमिंग 5 इयर्स तक आप सेक्शन 44 AD ऑप्ट नहीं कर सकते. तो जब आप 44 AD ऑप्ट नहीं कर सकते, इन दैट केस योर सेक्शन 44 AD4 इज गोइंग टू हिट, एंड जब वो सेक्शन हिट होगा, देन यू आर रिक्वायर्ड टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB. तो 44 AB की 5th क्लॉज यही है कि अगर आपका बिजनेस अंडर सेक्शन 44 AD4 है, आपका सेक्शन 44 AD4 हिट होता है, एंड योर इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इन दैट केस यू आर रिक्वायर्ड टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड. सो वन मोर थिंग दैट आई वांट टू क्लैरिफाई कि अगर आपकी बिजनेस रिसीप्ट्स 1 करोड़ से ज्यादा है, तो फर्स्ट क्लॉज कहता है दैट यू आर रिक्वायर्ड टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड, बट योर सेक्शन 44 AD allows you to opt the section 44 AD up to 2 crores, up to your turnover 2 crores. So जब आपकी turnover 2 करोड़ मतलब more than 1 करोड़ है, but up to 2 करोड़ रुपीस है, अगर आप सेक्शन 44 AD में अपनी इनकम दिखा रहे हैं, in that case आपको टैक्स ऑडिट as per clause A नहीं करानी है, because you are opting 44 AD. Okay, hope I am clear. So now that I want to discuss the 10 crore limit. So the 10 crore limit, if we say the Finance Act, Finance Bill 2021 ने increase करी है this limit को 5 crore से 10 crores. And when the limit was 5 crores, the limit was कि आप 5 करोड़ की limit तब opt कर सकते हैं when your total cash payments are up to 5% of the total payments. Means आपकी cash payments जो होनी चाहिए, that should be restricted to 5% of the total payments, and your cash receipts are up to 5% of the total receipts in the business. When I am talking about total payments and total receipts, so that payments and receipts are including capital as well as revenue receipts. Even if you have sold some fixed assets or you have purchased some fixed assets in cash, then also you are going to include this in the calculation of above formula. So जब finance bill आया था, यही दो conditions थी, but when the Finance Act passed, so they have put an additional condition कि अगर आपने check and bank draft से payments करी है and they are not the account pay check, so in that case that payment shall be regarded as cash payment. Same with respect to the receipts. Means अगर आपने कोई check से receipts ली है या bank draft से कोई receipts ली है and that are not account pay, so in that case that shall be regarded as cash payment or cash receipts. So you also have to check this additional condition while checking the limit of the 10 crore rupees. So if you are required to get your accounts audited and you have not audited that account, means आपने अपने accounts को audit नहीं कराया, then SAC is liable for the penalty of 0.5% of the turnover or INR, sorry, it's not of, it's or. So 0.5% of the turnover or INR 1,50,000 rupees, whichever is lower. So, and for the tax audit, we have a relevant rule, Rule 6G, which prescribes the form for the tax audit.
So let's discuss some key points on the tax audit form. So the form, so that rule 6G provides that you have form 3CA 3CD or form 3CB 3CD. 3CD is a form whose details are required to be filled by the assessee itself, and form 3CA and 3CB are the audit forms for a chartered accountant. So in both the cases form 3CD assessee fill करेगा, but auditor को किस form में अपना opinion देना है? एक आएगा form 3CA and another is form 3CB. So कब हमें form 3CA use करना है और कब form 3CB use करना है? So let's see. So this rule provides कि अगर assessee is required by or under any other law to get his account audited, मीन्स अगर assessee की रिक्वायरमेंट है किसी और एक्ट में ऑडिट कराने की, सो उसने उस एक्ट में अपना ऑडिट कराया है, देन उस इनकम टैक्स एक्ट में दोबारा ऑडिट नहीं कराना, वो उस एक्ट में ऑडिट करा ले विद इन द टाइम लिमिट्स, और इनकम टैक्स एक्ट में वो ऑडिट रिपोर्ट अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट सबमिट कर देगा, तो 44AB की ऑडिट की कंप्लायंस पूरी हो जाएगी. So that form, in that case अगर assessee ने किसी और एक्ट में ऑडिट कराया है, so in that case ऑडिटर को यूज करना है form 3CA और in the other cases form 3CB. Let's take example. कंपनीज को ऑडिट कराना होता है कंपनीज एक्ट में अंडर सेक्शन 143. So for the companies we use form 3CA. Let's suppose a partnership firm है, partnership firm में which is not required to get his account audited under any act. So in that case auditor will choose a form 3CB. There is one additional thing कि अगर आपने जो किसी और एक्ट में ऑडिट कराया है उसका अकाउंटिंग ईयर डिफरेंट है उस अकाउंटिंग ईयर से जिसकी आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो, when both the accounting years are different, so in that case you will not choose the form 3CA, you will choose a form 3CB. Let's take an example for this. In the Companies Act there is a clause कि अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है on 1st January, on or after 1st January, so उसका काउंटिंग ईयर एंड होगा 31st March of the following year. So let's take example. अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 31st December 2020, that is before 1st January, so in that case उसका फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर एंड होगा 31st March 2021. तो उसकी कंपनी ऑडिट कौन सी ईयर की होगी? दैट विल बी 31st December 2022, 31st March 2021. And same is for the tax audit period, because income tax में भी उसका ईयर 31st December 2020 से 31st March 2021 होगा. So in this case both the years are same. मीन्स कंपनी ने कंपनीज एक्ट में ऑडिट करा लिया, अब जब इनकम टैक्स में ऑडिट कराना है तो दैट बोथ द इयर्स आर सेम. So in that case assessee in that case auditor will use form 3CA. However, in the second case, when the company is incorporated on 1st January 2021, so according to the Companies Act, its first accounting year is going to be end on 31st March 2022. So the company audit will be for the period 15 months from 1st January 2021 to 31st March, 1st January 2021 to 31st March 2022. So the period is of 15 months. But our Income Tax Act doesn't have these type of provision. तो इनकम टैक्स एक्ट में तो आपकी जो टैक्स ऑडिट होएगी, फर्स्ट टैक्स ऑडिट होएगी, वो 1st January 2021 से 31st March 2021 में ही होएगी. So in this case both the counting years are different. कंपनीज एक्ट में 15 मंथ्स की ऑडिट होएगी, वो भी नेक्स्ट ईयर जाके होएगी. बट अगर हम देखें तो टैक्स ऑडिट तो पहले ही हो जाएगी, तो आपको तो रिपोर्ट कंपनीज एक्ट की मिलेगी ही नहीं.
So in that case, auditor shall not use the form 3CA. In that case, he is required to use the form 3CB. Next we have, what is the appropriate clause? हमें टेक्स्ट ऑडिट रिपोर्ट में क्लॉज 8 में ये मेंशन करना होता है कि हम कौन से क्लॉज में ऑडिट कर रहे हैं. So in that we have 5 clauses that we have discussed कि business की turnover exceeds 1 crore है, profession की receipts 50 lakh से exceeds है, या जो 44A, 44BB and 44BB में आप lower than that minimum profit दिखाना चाहते हैं, 44AD and 44ADFO. That 5 clauses we have discussed. उसके अंदर एक additional clause भी आता है, that is the third proviso to section 44AB. So the third proviso क्या कहता है? The third proviso says that in case where such person is required by or under any other law to get his accounts audited, it shall be sufficient compliance with the provision of this section if such person gets the accounts of such business or profession audited under such law before the specified date and furnishes by that date the report of the audit as required under such other law and a further report by an accountant in a form prescribed under this section. थर्ड प्रोवाइसो हमारा कहता है कि अगर किसी पर्सन को रिक्वायर्ड है ऑडिट किसी दूसरे सेक्शन में, तो इनकम टैक्स एक्ट में उसे दोबारा ऑडिट नहीं करानी. तो इनकम टैक्स एक्ट में उसे क्या करना है कि अपनी वो ऑडिट करा ले उसी सेक्शन में, उसी लॉ में, और उसकी रिपोर्ट फर्निश कर दे along with the further report by a chartered accountant in a prescribed form. The prescribed form we have form 3CA and form 3CB. तो इनकम टैक्स एक्ट की वो सफिशिएंट कंप्लायंस मान ली जाएगी. ओके कि जब उसने दूसरे एक्ट में ऑडिट करा लिया तो इनकम टैक्स एक्ट में उसे दोबारा ऑडिट नहीं कराना, वो उस एक्ट में ऑडिट करा ले और रिपोर्ट दे दे, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्दर रिपोर्ट दे दे, तो इनकम टैक्स एक्ट की सफिशिएंट कंप्लायंस हो जाएगी. तो अगर हम देखें तो इन दैट केस हम फॉर्म 3CA यूज करते हैं. हम 3CA यूज करते हैं कि अगर उसने ऑडिट करा लिया किसी और सेक्शन में तो उसे इनकम टैक्स एक्ट में फॉर्म 3CA यूज करना है. यस ना. तो जब आप क्लॉज सिलेक्ट करेंगे तो जब अगर आपने फॉर्म 3CB यूज करा है, मीन्स आपके किसी और एक्ट में ऑडिट नहीं हुआ है, आप अभी इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको क्लॉज चेक करना है आप किस क्लॉज में ऑडिट कर रहे हैं, ABCD एंड E, वो आपको क्राइटेरिया चेक करना है. बट अगर आप फॉर्म 3CA यूज कर रहे हो तो फॉर्म 3CA आप तभी यूज करते हो जब किसी और एक्ट में ऑडिट हुआ है. ओके so in that case the only relevant option is you are doing the audited in accordance with the third proviso to the section 44AB. In that case you are not required to check कि आप clause ABCDE में audit कर रहे हैं, नहीं. In that case you are doing the audit under the third proviso because किसी और act में audit हो चुकी है. Now you are only furnishing a report under form 3CA. So in that case, you will not select clause ABCDE. You have to select form third proviso to the section 44AB. Hope I have made clear all these provisions. So in case you have a doubt on any topic, please comment in the comment box, or you can also email your query on the email mentioned on your screen. So thank you so much. Have a nice day.